बोल. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. On behalf of Shreeyash College of Engineering and Technology, Aurangabad, I, Dr. Hulas Tonde, in the council, we have found in this our college institution innovation council. So under this IIC, we are going to organize a webinar on the topic entrepreneurship skills, attitude and behavior development. So this topic is specified by the Ministry of Education and Ministry of Education Innovation Council. So this topic will be presented by our esteemed resource person, Mr. Sheshnag C Sreeniwasa, and our principal sir, Honorable Dr. R.S. Pawar sir, has joined this meeting, and I will request him to give the preamble of this event. Over to you, sir. Principal sir. Okay. So I hope that I am audible to you all. Yes, sir, you are audible. Hello. Okay. So very good afternoon to one and all present in the meeting, and particularly today's eminent speaker, Mr. Sheshnag C Sreeniwasa, and all the participants, faculties and students. So Institution Innovation Council, IIC, of Shreeyash College of Engineering and Technology is working on this entrepreneurship development and startup development. And under this, we are organizing various competitions. Recently, I would like to bring it to kind notice of the resource person also. Recently, we have organized one idea competition, and we got many ideas, and definitely we are going to judge the best ideas. And out of these best ideas, we have planned to upload this idea to SmartIndia Heckathon national level competition also. And after that, under the incubation center of the Shreeyash College of Engineering, we are going to promote and support these startups so that their ideas will be converted into product. So till then, we have to be we have to support them, and we have to promote our students for going for the startup and going for their entrepreneurship development. I appeal to my faculty members and students to actively participate in idea competition on the SmartIndia Heckathon national level competition, and involve the students, mentor them, so that maximum students will be job provider. In spite of job seekers, if the students are preferring for the job provider, then we can say that we are the true engineers, true engineering teachers, and the true engineering students. Because job seekers will definitely will support a job, particular company, will get a money. But if you become an entrepreneur or create a startup, then you will be able to provide jobs to other students. You will be able to create the business, create the money, and there is no limitation to your career. Dear friends, job is having limitations. Up to particular limit you will develop yourself.
Up to a particular limit, you will earn the money. But if you choice, you select as a job to become an entrepreneur, then there is no limit. Definitely, hard work is there. You have to work little hard once. But that is a starting trouble. Generating the better ideas and go ahead in that up to the converting into realization. Definitely mentoring is required, support is required, financial things are also there. But finance will be available. Government of India, MSME and Ministry of Education, Ministry of Industry, MSME will, Government of Maharashtra will support for this definitely. Only you must have better idea, then you can go for converting into product. This is one thing. If you are selecting earlier idea, existing idea with some better advancements, better innovations, some better facilities, so we can call it as an entrepreneurship. And for that also you can go. College is definitely eager to mentor you. Faculties are eager to mentor you. Only student participation and faculty motivation and the guidance by speakers like Sheshnag and others will be definitely useful to my students and faculties. I welcome Mr. Sheshnag C Sreeniwasa, eminent speaker, to enlighten the session. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable suggestion and guidelines. Now, I would like to request Dr. Venkatramana, sir, to please introduce our eminent speaker. Thank you, sir. So my pride moment to introduce our expert, Mr. Sheshnag C Sreeniwasa. He is 2016. He completed MTech in Rajasthan and is a receiver of a gold medalist. And with the help of his team, they have won SmartIndia Heckathon 2016 winner. They have won the prize, and it is basically from power sector, basically Solar India power sector, and they have named it as a Sunintown. The project name is a Sunintown, and they got 1.5 lakh prize from the winning fund. And now they have started Sunintown Renewable Energy Limited company, and they have joined together with 4-5 the colleagues, and successfully they are running Sunintown Renewable Power Limited company. And also along with that, they have taken consultancy projects from different Indian states like Telangana and other states, and they are at present ready to consult as well as design and develop the solar systems like solar panels and also solar refrigerators and other things. And they walk over throughout the remote villages where the electric power supply may not be available. In such villages, they are supplying solar power energy to the rural people. It is like a service to our India. So that's how these people are serving, and by establishing a Sunintown company. Now I will request my expert, Mr. Sheshnag, to start the session. Thank you. Oh, am I audible at the outset? Am I audible? Anyone can reply on this? It's audible. Ramana sir, yeah, perfect. Yeah, thank you everyone. Thank you, sir, and for giving this opportunity. And yes, I will share the screen before we start. So I'll run through the presentation, also give you a brief overview about what we do and what are the steps you need to consider, and most of the lingering questions you will have.
during this entrepreneurship journey, or considering entrepreneurship as your career prospect, right? And I would like to be like for this discussion should be very attentive, and also you might ask all the questions. You can participate in all the questions. I would be very happy to answer any questions at any point of time. You don't need to wait till the end of the seminar, as generally we do, right? I'll just share the screen and take your confirmation before going ahead. Yeah. Is my screen audible? I mean, is visible? Yes, sir. Okay. Okay. Yeah, great. I hope everyone can see my screen, right? Yeah, it's all right. Okay, perfect. Yeah. So just to give a brief introduction about myself, as Ramana sir have covered most of this. We are a clean energy startup based out of Bangalore, and we have been in the space for 7 years now. And initially we started as consulting firm and consultancy, because getting capital, getting resources was a challenge. So we thought, okay, let us monetize our skills, what we have acquired during the course of time, right? After that, we gradually ventured into taking up end-to-end projects, set up solar power plants in residential, industrial, commercial spaces. And also we do ground-mounted power plants that is spread across many hundreds of acres, right? We also do take up those activities as well. And from the past 2 years, after the COVID scenario, which has hit us very hard, we actually have a tie-up with another our UK counterpart. So this is basically to supply solar-powered vaccine refrigerators. This will be located or installed at the rural healthcare services, where power quality is of an issue, where power availability is issue primarily. And sometimes when there is power, continuously low voltage will be an issue for the conventional fridges to operate, right? For all these problems encompassing, we have come up with the solar vaccine refrigerator that we have covered almost 13 states in India as of now, in different remote areas, and the site is very challenging, right? So we have tried to make this a business, but also at the same time serve the nation in whatever limited capability we can. So that is some of the information from my end. And yes, so things to consider before taking up an entrepreneurship. So everyone has this idea, and this coming up right now in a big way. So taking up entrepreneurship is, what are the things you have to consider, right? First of all, dream. What is your dream, right? Either a job seeker or a job provider. If you can be an employee or a businessman, it is up to you. There's no right or wrong answers. If everyone starts giving jobs, who will be working as well, right? That is a paramount point. So it is based on your mindsets. As would you be interested to be a laid-on person working in a company, or would you be having challenges to take care of? Would you like challenges to address, right? Even so, everyone will have a different kind of responsibility or mindset towards it, right? And being your own boss, people tell entrepreneurship, starting up, you can be your own boss. You don't need to basically answer to anyone. But that is completely wrong. That is a kind of a myth that we have. If you're not answering your boss, but you are answerable to your clients at least, right? So boss or clients, it is up to us. Answerability will be there, even though you're boss, but you can't. If you are telling that you can't listen to anyone else, you will be out of business anytime, right? You have to be very attentive, and you have to be sensible to their requests as well, right? And do you have the right attitude? This comes as the main crux of the point, right? Do you have the motivation? Not like one-time motivation, like everyone will plan for a college trip or some trip, right? You have the motivation at one point of time, but it is not sustained. After the end of the week, 90% of the people would have dropped out, right? That is not the kind of motivation we're looking at. For an individual basis, is the right attitude and motivation on a continuous basis. If you have, that is very important.
And guaranteed income or potential to grow your wealth. Yeah, this is the very interesting point, right? What is the how much wealth or business one can do? So there is no what do you say, scale of how much you can grow. It's completely dependent on your timing, your business models, your offering, your clients, your networks, right? All these things. Guaranteed income, yes, for a salaried or an employee, you get a guaranteed income, and potential to grow your wealth over an year will be limited. Obviously, there will be some kind of an hike year on year, but if you're an entrepreneur, obviously there's tremendous potential to grow you the wealth, right? We are seeing right now many entrepreneurs from across India. They're becoming unicorns. Unicorns, that's the definition is if any company has passed the $1 billion of valuation, right? $1 billion is something like 7,500 or 7,600 crores, right? If you have that kind of a valuation of a business, you are termed to be an entrepreneur, right? Or you're termed to be an unicorn. Sorry to correct that. Yeah. And probability of becoming successful. So everyone tells what being an employee is a good thing or being an entrepreneur is a good thing, but you have to take certain risk if you're interested, but take calculated risk is what I want to tell you. Like say more than 90% of the startups fail. This is truth, and these are facts, right? Are you willing to take this kind of impact or this kind of risk within you to start the journey? And secondly, this is very important because 90% of the startups fail, but why still government is pushing entrepreneurship is because this is across the world I'm talking about. But India, it might be a different case because we are having so much of opportunities. For that matter, people are looking for jobs, right? We have on the other way, on the other hand, companies, we are not finding right people to recruit. So on one hand, people are not finding jobs. On the other hand, they're not right people to be recruited by companies. So there's still problems with, even though we have resources, but we don't have skilled resources, right? So we have to kind of bridge the gap and make sure you're fit for the company or you work in or becoming one company, right? That is important. Ideas. Yes, idea is very important, but it is not enough. Every one of us will have certain one or the other idea, right? But the issue is idea is not alone doesn't take you anywhere. You have to implement the idea, and implementation is in the flesh, right? Idea is just maybe the skin, but implementation is the flesh of the idea, right? And others will steal your ideas? Completely not. If you can tell tens of hundreds of good ideas to your friends or colleagues, they might not have the same drive to actually implement it. So don't worry, share your ideas, and it is not and ideas are not patentable for that matter. If you have an idea, even tomorrow after you establish a business, anyone can copy your idea, right? There's no that cannot be patented. So only thing is you have to be a pioneer and up the game and understand what it is important, right? And other important things to consider, yes, it's not a one person activity. We are in India, we are very good at individual works, but when it comes to the team work, we certainly lag behind our counterparts. So having the right team is very important. And if you're a single person, please think over it. At least you need to have one more team member with you. At least there's no suggested team members like 3 people or 4 people or 2 people. There's nothing is right or wrong, but you need to have other people with you so that you can, and other people should have complementing skill sets along with you, right? If you have good at something, they should be good at something else, so that you both come together as a team and perform all the activities required, right? And one more thing is don't tag along your friends along with your friends just because they are your friends, right? Because for business, it is not about friendship, but it is more about would each of you understand the sensibilities and go forward, right? That is very important. So just because they are friends, don't tag along with them. Make sure you ascertain for yourself, is this the right person or for me or not? And leave alone your friendship outside the purview of business, right? And does the team have similar thought process, mentality, and process goals and mindsets? This is very important. If you have a certain views, will your co-founder will also be having the same views or similar views, but they shouldn't be not divergently apart. So for example, I'll give you, probably you would have thought everything, right? At one point of time, you at least consider 2 people to be simple. For an example, 2 people have started a business after many years of struggle. They could raise their business more than anticipation, right?
one fine day they will get an offer from another company to buy their business. So one person might be like, no, this business is my baby and I will stick onto it. The other person might be a different guy who is like, no, let us exit this business and probably we can make some money and do something else in life. So when it comes to these kind of difficult questions, I'm not you can't anticipate all the questions. I'm giving one such example, right? Or both of your team members are in the same page, because you would not have discussed in the beginning, but over a period of time this has to be discussed and covered. And in case of there's a conflict, how do you resolve it, right? Someone's word has to stick. So have an internal governance system in place. And do you have existing support structure and resources? Please do gather them. And any support or any resource you get is very pricey, right? Try to see what are the resources you will have with you or with your friends, colleagues, families, etc. And try to take these resources, because at the initial stage, this is very crucial in terms of money, in terms of capital, in terms of space, etc. and etc. Right? And you have the right attitude and willingness to learn. Don't think you're the expert of something, right? Always think that you lag behind something. You start, okay, there's something else to learn as well. Because over a period of doing one project, two projects, or selling a few items, right, you will understand what are the problems associated with you. It might be good at theory, but when it comes to practical things, it will be a different ballgame altogether. So try to adjust, relearn, and course correct yourself, so that you'll be having the right attitude, right? And willingness to learn. These are self-explanatory anyway. Yeah. Yeah. And before starting a company, everyone tells like, what is a company and why should we start a company? How do you quantify things, right? So as for my understanding, this is a very good chart to make the founder's dream into the company goals, right? How do you think there are vision statements or mission statements of companies or organization across? This is based on something, right? So how do you start? Say, for example, but everything you have to put it in numbers, so it's easier to translate into that, right? For example, there is one founder, right? One founder, and he has a personal dream of making 5 million USD. Okay. So 5 million USD, consider there are 4 founders. Okay. So, yeah. So what happens is, if you have 5 million USD, the total value of the company should be considered equal share of the company. Value of the company should be 20 million USD, right? And found equity or of percentage of founder at exit, that is not 20%, it is 25%. It should have been like, if it is 4 founders, 100%, it is 25%. So he will hold a equity of 25%. If you have any idea what equity is, it's like shares. You have 20% of shares of your company, right? 25% of shares of some company, right? So that means to say the company should have 20 million US dollars. That's when the founder can earn so much, right? And say this is spread across 5 years. Right? So if it is 5 years, profit for 1 year should be $4 million, so that after 5 years, the company will be valued at 20 years. That's what the chart says. Please stop me if you have any questions, or if I'm running too fast or too slow. So accordingly, I will try to adjust, right? So profit should be $4 million. So if the profit should be $4 million, and if your margins are 40%, right? So your revenue of the company should be $10 million. If your revenue per year is $10 million and the margin is 40%, and you make a money of $4 million per annum, that is indirectly translating into how much personal wealth you can do. Company might, if you have seen most of the companies like Flipkart, Amazon, they're too big to talk about. But anyway, the individuals or the founders would have made enough money, but the company is still lagging behind, right? That is a different story altogether. But this is a generic kind of an assessment of how do you translate your company or your personal dreams, that is the founder dreams, to company goals. I hope this makes sense, right? Yeah. And after you have thought about all the process, think about you're a company, you're selling one or the other thing to some industry, right? You have to be very crisp, right? So this is a very crisp and very neatly without any confusions. The company XYZ will sell green plastic bags to a packaging industry at rupees 2,000 per bundle, each bundle consisting of 1,000 bags.
right? This is very simple and straightforward. There's no ifs and buts. There's no confusion here and there, right? So this is what we want, because it looks very simple, but when you actually think about it, first of all, you have to think about what should you sell, either product or service. If it is a product, what is the product? If it is a service, what is the service? And how do you quantify, right, in terms of bags or bundles or units? And how much this is your selling price. So if this is your selling price, you will have to arrive at your cost price. Cost includes not only goods, your overhead cost, everything else. So it is a simple slide, but it will contain a lot of homework to be done before you put this information in any of the slides. This is just an example, but similarly, you can come up with other deal. Deal is like, what is the offering you're making to your clients, right? In a crisp and very neat manner. And the next point is the market segmentation, right? Market segmentation is like markets, for example, market segmentation can be like customers who are buying similar products. For example, if you go to Reliance Fresh, you might carry a pound of bread, and along with it, you might require a jam or say butter or something else, right? So customers buying different products. So you can kind of get a clue, okay, if this customer is buying a bread, so I'll place my butter or jam in the same or nearby compartment. You got my point. That's something like that. So that is a kind of similar product, that is market segmentation, or with same sales cycle. So what do I mean by sales cycle is, for example, there are businesses where you are a recurring customer. For example, your phone bills, you pay month on month. So your sales cycle is monthly. And for example, someone who wants to buy a car, right? Their cycles is not every day one buys a car, right? So it might be, for example, 5 years or 10 years, depending on the customer. Probably it is once in 7 years, one person may buy a car, or some people will have it for life, right? So it can be 1 or 4 or 3, anything in between. And with a similar expectation of providing values in similar ways. So we should be able to provide value in a similar way, right? That is kind of a comparison of your product with other offerings in the market, right? And existing word of mouth between customers in the market, right? How can you make the word of mouth as your marketing thing if someone doesn't have a marketing budget, at least to start with? So market segmentation can also be like, for example, if you have a product, do you want to start it only in Aurangabad, or do you want to take it to Mumbai? So different locations, or Bangalore or Pan India. You can't grow your products everywhere altogether, except online, right? Online, if you are listed your product in Amazon, that's a different thing together. But if you're talking about something else, you have to understand the market segments. Okay, I'll start, say, in Aurangabad to start with. So tomorrow I'll start with, say, Pune, or say any other nearby locations, tier 1 cities, right? So accordingly, you scale up. So what it means to say is, so you have to capture the low-hanging fruits, right? Which is the best location to start your business, right? That is the identification, location, or what is the right market segment. Are you targeting only the youth or the elderly, or the between certain age group? So market segmentation can be sliced into multiple things, right? And your customer can serve as a compelling and high value reference for each other in the market. So initially, when we started, for example, our own example, it was very tough for us to get initial clients. But once they are happy, if you have an happy client, they'll give you 10 more references, right? So those are very worthy, because their word will be listened with by their counterparts or their neighbors or friends or family, right? So it is very important to do quality work and don't run behind money. Money will come to you, I think many people have told, but run behind the quality of the work you're offering. You should be having an edge in terms of capacity, or in terms of time, or in terms of cost, or in terms of value, right? Everyone knows iPhone is expensive, but still people buy it. So leave the thought aside that anything which is cheap will run. That is the Indian mindset, right? Nothing like that. If iPhone works, there are paying customers for to buy high, which are 2 times or 3 times higher than it has to be, than the actual value for that matter, right? So don't think about all this aspect, but think about cost is not the only driving force. Believe me, if you think cost is, if you get a lesser cost, then you think if this will work, then it means to say that you're in a very crowded marketplace.
There's so many competitors, and cost is your only defining factor, right? But can you have other factors like better customer, better services, or different service segmentation? So the best way of identifying a problem or an idea for a business is think about all the problems you and everyone else have in your life, and can you have a solution for that? Can you build a solution around it? If you have a problem, you're willing to pay to solve the problem if someone is giving you a solution. Similarly, if you think many people are having the same kind of problem, then it becomes a very good business case to start, right? That is how we should do. Don't think about idea, but think about problems to solve. Then it translates to idea, then it translates to your personal founder dream, then it translates to the company vision, right? Company targets. Start identifying all possible customers, buyers who could benefit from your product services. So some of the questions you should ask is, why will someone buy your product? As simple as that. अगर पापा पूछेगा तो अरे ये प्रोडक्ट सही है, क्यों कोई तुम्हारा प्रोडक्ट लेता है, तो दुकान से खरीद रहा है, तो मतलब इट मेक्स सेंस दैट समवन शुड बाय योर प्रोडक्ट. किसके लिए आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई भी, है ना? So, and secondly, why should your customer care about your product being better or cheaper? अगर आप ही कस्टमर मानो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं तो चीप है, कभी कभी क्या होता है कि आइडिया अच्छा हो जाएगा, बट मार्केट में कोई बायर नहीं रहेगा, क्योंकि उतना पे करने का लायक नहीं होगा वो. इट माइट बी गुड, इट माइट बी चीपर ऑल्सो. लोग सोचेंगे, अरे नहीं, मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मैं थोड़ा महंगा देके खरीदूंगे. सभी लोग है ना? बहुत लोग है. एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट? कौन सा बिजनेसेस होगा अगर आपका बिजनेस सिर्फ B2B अगर केटर कर रहे हैं तो? अगर बिजनेसेस मतलब कस्टमर्स भी हो सकते हैं, अगर आपका बिजनेस B2C है तो. B2B और B2C का अंतर क्या है कि B2B मतलब B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अगर एक बिजनेस दूसरा बिजनेस का कस्टमर है. B2C मतलब बिजनेस का मेन कस्टमर बिजनेस नहीं है, क्लाइंट्स है, रेगुलर कस्टमर्स है आप में, ऐसा. ठीक है? सो उसमें व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कैन बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट? आगे भी सोचो कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, एक कस्टमर बेस है, सो ये बिजनेस अगर मैं चालू करूंगा तो और कौन सा बिजनेस से बिजनेस को फायदा होगा आपके प्रोडक्ट से. इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, है ना? एंड बीचहेड मार्केट. So I think most of the people would have heard beachhead market is like in your market niche. This is the market that you conquer first on your way to taking over the world. मतलब एक मार्केट है, मान लो औरंगाबाद में स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल. बट क्यों औरंगाबाद? कुछ जस्टिफिकेशन है? क्योंकि आप औरंगाबाद में है तो इसलिए नहीं कि उधर ही स्टार्ट करना है. अच्छा है, थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा, बट आपको और भी शहर में अच्छा उसका भाव मिलेगा, खरीदने वाला मिलेगा. मान लो उधर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो बीचहेड मार्केट मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे? अच्छा ठीक है, आपके पास आइडिया है, प्रोडक्ट है, आपको पता है कितने में बेचेंगे तो कितना इसका मुनाफा होगा, वो अलग बात है. बट बायर, कैन यू आइडेंटिफाई बायर यूजिंग द बीचहेड मार्केट? इसीलिए असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो कोई मार्केट में, कोई शहर में कोई खरीदने वाला ही बहुत कम है, तो उधर आप मार्केटिंग करके फायदा नहीं है ना. सो आपको जाना पड़ेगा ये बेचने के लिए जिधर बायर्स होंगे. सो उसके लिए आपको ये असेसमेंट करना पड़ेगा कि बायर्स को पकड़ने के लिए बीचहेड मार्केट, सो समथिंग इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. इससे शुरुआत कर सकते हैं हम. इधर हम देखेंगे, सीखेंगे, गलती हो तो सुधारेंगे. बट अगर दूसरे शहर में जाना है तो एक गलती पूरा सुधर गया होगा, वो दूसरे शहर में उसी गलती को रिपीट नहीं करेंगे. सो ताकि एक बार स्टैंडर्डाइज हो गया सिस्टम, वो दूसरे शहर को लेके जाएंगे, है ना? So that is the meaning of beachhead market. Can you identify a buyer? Does the buyer have necessary funds to purchase your product? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, बट आपका बायर के पास उतना पैसा है क्या आपसे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए? वो भी देखना पड़ेगा आपको, है ना? और ये प्रोडक्ट कस्टमर पेन को क्लियरली सॉल्व करता है कि नहीं? कस्टमर का पेन तो जरूरी है या नहीं इसमें? मतलब ऐसा थोड़ा बहुत पेन हो सकते हैं तो लोग सह लेंगे, मतलब टाल देंगे, बट कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ खरीदेंगे नहीं. ठीक है? अगर कस्टमर पेन ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो कस्टमर आपको पैसा देके सर्विस लेने के लिए तैयार है, सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है ना? इस कस्टमर एक्सेसिबल इंपॉर्टेंट है. मतलब आप एक जगह बैठे हो, कस्टमर दूसरा जगह है. अभी आजकल तो डिजिटल दुनिया में तो सब लोग सब जगह मतलब सर्व कर सकते हो, अलग बात है.
मतलब आप फिर भी देखो कि अगर मान लो आपको कोई किसी कस्टमर पे आएगा, मान लो दिल्ली से ऑर्डर आएगा, मान लो आप सर्व कर सकते हैं क्या? हाँ, और कस्टमर एक्सेसिबिलिटी है क्या? और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अगर नया कस्टमर को के पास कुछ बेचना है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब आपका, आप खुद जा रहे हो तो, नहीं तो आपका कोई एम्प्लॉय जा रहे हैं तो उसका भी कुछ कॉस्ट होगा। एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए खर्चा किधर आएगा, कितना होगा, है ना? अगर आप कुछ सोप बेच रहे हो, वो सोप बेचने के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है आपको कि ताकि रिटर्न आए, है ना? और लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब अगर मान दो ओला उबर आप देखेंगे तो वो तो आप रिपीटेड कस्टमर्स है, एक बार ओला उबर ऐप इंस्टॉल कर दिया, वो तो आपकी कभी भी, जो डेली भी हो सकते हैं, हफ्ते में भी हो सकते हैं, बट होगा जरूर, महीने भी हो सकते हैं, होगा जरूर। सो लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? अगर सोप, अगर मान सोप का एग्जाम्पल दो, आप तो महीने में 3 बार, 4 बार, 2 बार, जितना भी आपका कितने लोग हैं उस हिसाब से वो रिपीटेड कस्टमर है आप। सो अगर एक सोप का ही आप भाव देखें, लाइफ बॉय सोप पकड़ेंगे, सिर्फ लाइफ बॉय सोप आप खुद कैलकुलेट करो, आपका पूरा लाइफ टाइम में कितना बार यूज करेंगे, कोई भी सोप होगा ना, कितना बार यूज करेंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, वो डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एक बार का काम है, और लाइफ टाइम वैल्यू, एक बार कस्टमर एक्वायर हो गया और दोबारा आप बेच सकते हो उसी चीज को, उस कस्टमर को, उसके मतलब क्या है, एक बार खर्चा किया बट बार बार आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, है ना? कैन यू डिलीवर ए वाइल होल प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ वाइल प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट, मतलब पूरा प्रोडक्ट आप कर सकते हो क्या? अगर कस्टमर को ये चाहिए 100%, मतलब एक चीज चाहिए, आपको पूरा डिलीवर कर सकते हो, नहीं तो पार्टली डिलीवर कर सकते हो। अगर पूरा आप डिलीवर करेंगे तो उसमें पैसा है, अगर बताएंगे तुम नहीं सर इसे इतना हम प्रोवाइड करेंगे और दूसरा चाहिए तो आप दूसरी कंपनी से लेना पड़ेगा, वो कस्टमर को उतना फीलिंग नहीं आएगा, उतना इजी नहीं होगा, ये बात है। और कंपटीशन, आप जो बिजनेस कर रहे हो, ओके, मतलब अगर कुछ अच्छा नया इनोवेटिव बिजनेस है तो जनरली लोग बताएंगे कंपटीशन क्या है तुम्हारा, वो बताएंगे नहीं नहीं हम कुछ, कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर बिजनेस में होगा कंपटीशन, अनलेस इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन कुछ फूड फाड बिजनेस हुआ है तो। कंपटीशन कैसे करना है? डायरेक्टली कंपटीशन नहीं होगा बट इनडायरेक्टली तो होगा। हाँ, सो कंपटीशन डिराइव करना है, आपका कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये सब अंदाजा रखना जरूरी है। और नेक्स्ट सेगमेंटेशन क्या है? मान लो अभी आईटीसी कंपनी देखो, वो तो सिगरेट बेचने वाला कंपनी था, अभी सोप साबुन बेच रहे, बिस्किट भी बेच रहे हैं, है ना? सो कोई भी बिजनेस के लिए अगर एक बार आपका कस्टमर बेस बन गया, अब तो मान लो आज साबुन बेच रहे हो, कल एक और मार्केट में नया प्रोडक्ट निकाल सकते हो, टूथपेस्ट एग्जाम्पल। सो आपका जो भी कस्टमर है सबको आप मार्केटिंग कर सकते हैं एक ही बार, है ना? एक बिजनेस क्या होगा, अगर पूरा आपका एस्टेब्लिश हो गया, थोड़ा सा सेटअप हो गया, उधर सोना मत, क्योंकि अगर जब भी आपका कंपनी का ग्रोथ रुकेगा, मान लो कि बिजनेस नीचे जा रहा है, ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए, अनलेस ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कोविड और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी अदर थिंग्स, है ना? सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट क्या बेचेंगे उसी कस्टमर को, ठीक है? कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर, व्हाट दे सेल टू हुम एट व्हाट प्राइस, डू रिसर्च। वही कंपटीशन का जो बात क्या हुई है, इज योर कस्टमर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफ सो एनी चांस टू रिड्यूस देयर प्राइस वुड could give them a huge benefit over their competitor। अगर मान दो दुकान है, बिस्किट बेच रहे कोई दुकान, हर दुकान में बिस्किट वही बिस्किट मिलता है पार्ले जी, अगर आप 50 पैसे कम कर दिया तो, शायद 1 रुपए कम कर दिया तो, पता नहीं कैसे कम करेंगे, कम कर दिया तो यू विल हैव बेटर से, क्योंकि इतना ओवर क्राउडेड मार्केट में कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम भारत में कहेंगे कि अगर उसका खर्चा कम है, कॉस्ट कम है तो बिकेगा जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है, बट सिर्फ ओवर क्राउडेड मार्केट के लिए अगर कॉस्ट कम हुआ तो वो बिकेगा जरूर, बाकी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता, है ना? कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बाय एग्जांपल, मान लो प्रॉफिट पर एनम लेफ्ट साइड है और कॉस्ट ऑफ सेल राइट साइड है। सो आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे लाइट ब्लू में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम था बट कॉस्ट ज्यादा था सेल का, अगर मतलब वो वाई एक्सिस अलग अलग वैल्यू से, वैल्यू से इसी एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा था। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, क्योंकि एक बार कस्टमर एक्वायर हो गया, दोबारा उनको एक्वायर नहीं करना पड़ता है, सो इसलिए क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर देखो कॉस्ट कम हो गया, सेकंड स्लाइड में, सेकंड राइट साइड में, बट प्रॉफिट ज्यादा हो गया, मतलब
कॉस्ट ऑफ सेल इनिशियल ज्यादा होता है, जाते 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 अगर वो कम हो जाता है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बट 1-2 साल 3 साल 4 साल में पता चलेगा जरूर आपका। अगर मान लो रिपीटेड कस्टमर है, अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और एक और फ्रेमवर्क है एवेल्युएशन फ्रेमवर्क फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के बाद किया हम, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बायर क्या है, फंडेड है या नहीं, बाइंग रीजन क्या है, एक्सेसिबल है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर कर रहे हो क्या, कंपटीशन, नेक्स्ट सेगमेंट और फाउंडर्स टीम, ये सब आपका पैरामीटर्स है। इसमें आपको ऊपर देखेंगे तो सेगमेंट ए बी सी लिखा हुआ है। सो उसके बेसिस पे क्या होगा, सेगमेंट ए एग्जांपल मान लो कोई एक सेगमेंट है, उसमें आपको वेटेज लेना पड़ेगा, मतलब स्कोर देंगे ना आपका एग्जाम होने के बाद। इन द स्कोर ऑफ 10 वो बायर इस मार्केट सेगमेंट है, सेगमेंट ए के लिए मान लो बैंगलोर मानेंगे, ए प्रोडक्ट ए बायर एक वैल्यू दे दो 1 से 10, कोई वेटेज हो जाएगा ना उसका। सो उसी हिसाब से बैंगलोर हो गया, औरंगाबाद हो गया और मुंबई हो गया और पुणे हो गया, जिधर भी हो। हाँ, ये शहर भी नहीं है, बाकी भी हो सकता है। मान लो सेगमेंट है, ऐसा हो सकता है कि मिलेनियल्स जेनजी बताएंगे ना, मिलेनियल्स हो जाएगा, बुजुर्ग लोग हो गया और मिड लाइफ वाले हो गए, वो भी मार्केट सेगमेंटेशन का तरीका है। और दूसरा मार्केट मतलब ऐसा ही अलग अलग आपका प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन लोकेशन हो सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन आपका अलग अलग मान लो लोग हो सकता है, एज का हो सकता है और भी हो सकता है। उसमें वेटेज दे दो, उसमें नीचे टोटल डालो, उसको सब कुछ आपके हिसाब से ही वेटेज डालो, क्योंकि वेटेज डालना भी इतना आसान नहीं है। आप अगर एक का कम करेंगे, एक को ज्यादा करेंगे, इट शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग है ना। आपको डिसीजन हमेशा डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे तो बहुत फायदा में होंगे आप, क्योंकि डिसीजन ऐसे ही हम ले लेते हैं कभी कभी सोचे बिना, है ना। बट टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बोलने के लिए अच्छा है, बट इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो जनरेट करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन जो भी हम बताए हूँ ये सब जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये तो रेडिली अवेलेबल किधर भी नहीं होता है ना। सो इस इन्फॉर्मेशन सब टोटल डालो, फॉर एग्जाम्पल औरंगाबाद डालेंगे, बैंगलोर डालेंगे और पुणे डालेंगे, सबका टोटल आ गया। किसका टोटल ज्यादा है उसका मतलब उस शहर को टारगेट करो फर्स्ट। किसी में एक शहर का ज्यादा मान लो एक मार्केट सेगमेंटेशन का एक पैरामीटर का ज्यादा होगा कम होगा, कोई दूसरे में उसका ज्यादा होगा, नहीं तो दूसरे का कम होगा, कुछ भी हो सकता है, पर टोटल डालो तो साफ रहेगा। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन दिस, है ना। एंड फाइनेंशियल्स एंड की वैल्यू ड्राइवर्स, मान लो फाइनेंशियल्स कैसे होता है, वही कैलकुलेट प्रॉफिट्स तो करना ही है। not a good idea because your business is not financially stable yet. So अगर स्टेबिलिटी हुआ तो एक बिजनेस में, मुझे पता है एक सोप करने में कितना खर्चा आता है, कितने में बेचूंगा। शुरुआत में क्या है कि खर्चा भी पता नहीं होगा, कितने में बेचेंगे भी पता नहीं होगा। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। एक थोड़ा लंबा चौड़ा अगर एक सेंस है तो ठीक है, बट फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो वो तो एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना, एक में इतना आ रहा है, हम 1000 पीस या 1 लाख पीस भेजेंगे तो इतना हो जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आसान है, सब लोग करेंगे। फर्स्ट बिजनेस आइडिया में ध्यान रखो, प्रॉफिट्स तो आएगा ही, ठीक है। रियलिटी चेक क्या होगा, नॉट ए गुड आइडिया टू डेवलप ए प्रोडक्ट व्हेन सिंपल कैलकुलेशन द बैक ऑफ एनवेलप शोस यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी विद इट। कोई बताएंगे कोई फैक्ट्री डालना, इतना पैसा चाहिए, बैंक को जाएंगे, अगर वो पैसा वो बैंक को नहीं दे पा सकते हो, मान लो उनका जो इनिशियल खर्च है वो ज्यादा है और पीरियड ऑफ टाइम उतना उनका मुनाफा नहीं है, सो ताकि लोन भी नहीं रीपे कर रहा है, तो इसका मतलब वो तो आइडिया ही बेकार है। इतना सिंपल है, आपको सामने दिख रहा है तो इतना बेकार है, उसको छुओ मत, नहीं तो आपका जिंदगी का 2 साल 3 साल बर्बाद करेंगे, है ना। और फाइंड सब्सिडीज, बूटस्ट्रैप, बोरो मनी और अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट को हो गया, कोई एनजीओ का हो गया। बूटस्ट्रैप मतलब किसी से भी पैसा रेस नहीं किया, खुद का पैसा खुद से कुछ कर रहा है ना। बोरो मतलब लोन लिया, घर से लोन लिया, फैमिली से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, नहीं तो बैंक से लोन लिया, जैसे भी हो। और अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स जब आएंगे, आपका बिजनेस अगर कुछ भी हद तक पहुंच गया तो उसी टाइम तो इन्वेस्टर आएंगे। सो इन्वेस्टर बात का बात है ना। इनिशियली भी इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, मान लो तुम्हारा अंकल कोई भी है, अच्छा लग रहा है, वो बताएंगे ठीक है इतना मैं पैसा दे दूंगा, मैं मुझे इतना परसेंटेज दे दो। इनिशियली बहुत कम होता है जनरली,
क्योंकि किसी के ऊपर पैसे डालना इतना आसान काम नहीं है ना। हाँ, सो इन्वेस्टर्स लेट होंगे, वो वैल्यू करेंगे कंपनी को, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है वो देखेंगे, उसके बाद इन्वेस्टर आएंगे जनरली। ठीक है, do all this by knowing and showing that your product will be profitable in the near future. अगर आपको घर में भी अगर बताएंगे ना कि नहीं मैं बिजनेस खोलूंगा, उनका थोड़ा आपका रेजिस्टेंस होगा ही, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होगा। बट एक चीज ध्यान रखो, अगर घर में आप खुद नहीं कन्विंस कर पाए तो बिजनेस में आपका क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, है ना। खुद का घर में नहीं आपको संभाल नहीं रहे तो आपका मन कह रहे कि स्टार्टअप करें, अगर घर में कोई बता रहे, क्योंकि उनका सोच थोड़ा अलग है, आजकल का दुनिया अलग है। वो भी गलत नहीं है, उनका सोच के हिसाब से वो सही है, बट आजकल दुनिया वो देखा नहीं है, एक्सपोजर कम होगा, वो सोचेंगे कि यार बिजनेस करेंगे तो उससे अच्छा नौकरी कर लेना, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। क्योंकि उनके जमाने में नौकरी करना, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज के जमाने में पैसा कमाने का एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस करना, दैट इज मच मोर लुक्रेटिव, मच मोर चैलेंजिंग, मच मोर रिस्कियर। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड बिजनेस है। अगर आपको कम पैसा कमाना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है और आप प्रैक्टिकल पर्सन हो और एटीट्यूड सही है, तो ठीक है, एक बार लेके चलो देखते हैं क्या होगा। और इतना सारा अपॉर्चुनिटी, ये मत सोचो कि अरे बिजनेस बर्बाद हो गई तो क्या करें। आपका मैं बता रहा हूँ, बिजनेस बर्बाद हो गया तो भी दो बिजनेस करने का जो एक्सपीरियंस आप सीवी में जब डालेंगे ना, इतना ये बिजनेस में संभाला था, ठीक है, एक कुछ रीजन की वजह से हम क्लोज करना पड़ा, उस एक्सपीरियंस आपका सीवी में बहुत मायने रखता है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा हम कोई भी दोस्त, 2-3 दोस्त भी ऐसा किया है, बिजनेस सबका नहीं चलेगा ना, सो उनका चला नहीं, बाद में उनका नौकरी भी लग गया। सो ये मत सोचो कि अरे बिजनेस बर्बाद हुआ तो क्या करें। द वर्स्ट केस पॉसिबल में भी आपके पास अगर आंसर है, अगर उसी चीज को आपके घर में बता सकते हो, कन्विंस कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, है ना। सो स्टार्टिंग थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, 1 साल 2 साल के बाद अगर आपका कुछ लाइबिलिटी है नहीं है, अगर नहीं तो आप कमाएंगे तो ही घर चलाना है, तो इसमें मत घुसो। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल थोड़ा बहुत ठीक है, घर पे चल रहे हो, उसको वो लोग संभाल रहे हैं, पापा मम्मी, बाकी आपका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, कुछ लोन नहीं है, कुछ मान लो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, 1-2 साल काम करो, बाद में भी कर सकते हो। बट अभी में आपका इंटरेस्ट क्या है कि अभी आपका गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप कॉलेज में हैं, सो टाइम बर्बाद होने का दिक्कत ही नहीं है, आप कितना भी ट्राई कर सकते हो। आजकल इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म, द यूनिवर्सिटी, द कॉलेज गिव्स ए गुड प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर योर बिजनेस, है ना। क्योंकि एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं चला तो ठीक है, अभी पता चल रहा है, अगर मान लो कॉलेज छोड़ने के बाद आपको पता चला ये बिजनेस सही नहीं है, तो कितना निराश होंगे, टाइम भी होगा, एफर्ट भी पानी में चले जाएगा। उससे अच्छा अभी ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो, चलेगा तो अच्छा है, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, कोई बता, किसी को पूछने का भी जरूरत नहीं। अगर नहीं चला तो वैसा है, आपका एम्प्लॉयमेंट तो है, बैकअप प्लान, है ना, उस हिसाब से सोचो। ठीक है, और चेक इफ योर प्रोडक्ट विल प्रोवाइड सफिशिएंट वैल्यू टू सस्टेन ए हेल्दी बिजनेस। मतलब बिजनेस में कैसा होना चाहिए कि वो वैल्यू दे रहे कि नहीं, कुछ तो आप मुनाफा का प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं, वो एक बार देखो। ठीक है, हेल्दी हो, क्योंकि उसी के ऊपर बिजनेस हेल्थ का डिपेंड होगा। ठीक है, और डेवलप ए फाइनेंशियल ट्री, है ना। लुक एट योर बीच हेड मार्केट इन स्टेबल सिचुएशन। मतलब फाइनेंशियल ट्री अज्यूम करो कि आपका बिजनेस 3 या 5 साल में स्टेबलाइज हो गया, उस समय में आपका फाइनेंशियल मॉडल कैसे रहेगा, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि अभी स्टार्टिंग शुरुआत का जो भी पैरामीटर्स है वो बहुत वेरिएबल है, बहुत डायनामिक होता है। आपका खर्चा भी बहुत वेरिएशन हो सकता है, आपका सेलिंग प्राइस भी वेरिएशन, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है ना। स्टेबिलिटी एक बार होने के बाद एक जगह पहुंचेगा, ये भी अज्यूम करना पड़ेगा आपको। इट्स डिफिकल्ट टू डू इट, बट यू हैव टू अज्यूम बीइंग ए प्रैक्टिकल, रीजनेबल, स्मार्ट गाइस ओवर देयर, है ना। ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसी का हेल्प ले लो कैसे करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोगों को सब कुछ समझ में नहीं आ जाए। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, है ना। मैं पहले सोच रहा था अरे सेल्स कौन करेगा, सेल्स तो मेरा बस का बात नहीं है। अभी मैं एंटरप्रेन्योर होने के बाद मैं सेल्स कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, साइट विजिट कर रहा हूँ, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। एक बार आपका खुद का है ऐसा एहसास हो जाएगा तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे उस बिजनेस के लिए, है ना। सो वो मन से हटाओ कि आप इंजीनियर हो, कोई इंजीनियरिंग काम ही करना है। बिजनेस तो कुछ भी कर सकते हो यार, आपको टिश्यू पेपर भी बेच सकते हो, बड़ा कंपनी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। छोटा छोटा सी चीज पकड़ो, बड़ा हो जाएगा, है ना। एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंशियल ट्री। फाइनेंशियल ट्री में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट,
और कॉस्ट टू कस्टमर और सेलिंग प्राइस ऑफ कस्टमर और लाइफ ऑफ कस्टमर. मान लो एक ही चीज आपको एक ही कस्टमर को कितना बार खरीद सकते हैं. इट कैन बी वन टाइम, इट कैन बी मल्टीपल टाइम्स, राइट. और लाइफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लाइफ टाइम क्या है. अगर मान लो आपको जूस भेज रहे हो टेट्रा पैक में एग्जांपल, उसका लाइफ तो 6 महीने रहेगा. सो आपका प्रोडक्ट भी कुछ एक्सपायरी नहीं तो इतना टाइम का लिमिट है क्या, वो एक बार समझो. मार्केट शेयर, टारगेटिंग 5% शेयर ऑन ए क्राउडेड बिजनेस और 70% शेयर वेयर नॉट मेनी आर राइट नाउ. इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इतना सारा बिस्किट कंपनी है एग्जांपल, उसमें 5% मार्केट में भी आप टारगेट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, हाथ पैर मारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी है द प्रोडक्ट. उसमें 5% लेना है. नहीं तो कोई नया बिजनेस सेगमेंट में अगर मान लो बहुत कम प्लेयर्स है, नहीं तो कोई भी नहीं हो सकता, जो भी है उसमें 70% मार्केट शेयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो इसका मतलब सोच बदली है, ताकि आप किधर टारगेट करना है कि इनोवेशन के ऊपर टारगेट करो. और इनोवेशन शुड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, मतलब आइडिया एक चीज वो तो 0.5% और 1% होगा मेरे हिसाब से आइडिया, ठीक है. बाकी 99% आपका बाकी अलग है ना. आइडिया हो गया, उसके बाद क्या क्या बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, लोग खरीदेंगे या नहीं, ये आइडिया को वो सब में आइटरेशंस होगा. ट्यून करते 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 आप पहुंच जाएंगे, है ना. सो मार्केट शेयर 5% शेयर ऑन ए क्राउडेड बिजनेस, नहीं तो 70% शेयर ऑन ए न्यू बिजनेस, न्यू मार्केट सेगमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप सोचो कि क्या सही रहेगा. मेरे हिसाब से 70% शेयर, जिधर कोई नहीं है तो बता सकते हो ना, अरे भारत में हमारा 70% मार्केट शेयर है, वो बड़ा बात है. भारत में नहीं, भूल जाओ, मुंबई में 70% मार्केट शेयर है और औरंगाबाद में 70% शेयर है इस मार्केट के, मतलब ये बड़ा चीज होता है. अगर एक शहर में आप 70% या 80%, 50% जो भी कुछ भी करेंगे, वो तो दूसरे शहर में भी आप रेप्लिकेट कर सकते हो, है ना. और थिंग्स टू डू, डिफाइन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, मतलब आपका क्योंकि एक बार ऐसा सोचो मत कि अच्छा मेरे पास ये प्रोडक्ट है, एक खरीदने वाला है तो बिक जाएगा. बट कंपटीशन क्या है, इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बेहतर है वो देखना पड़ेगा ना आपको. और स्पीक टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स. मतलब एक बार बिजनेस हो गया, मतलब किसी, अगर मान लो एक बिजनेस खोलना चाहते हैं आप, मान लो एक एग्जांपल आपको एक जूस बनाना है टेट्रा पैक में, वो आपको कैसे वैलिडेट करेंगे जूस बनाना. अगर मान लो आपका पापा मम्मी को पूछेंगे, फ्रेंड्स को पूछेंगे, तो आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते हो लोग, सो अच्छा चीज बताएंगे, उसमें आपको हॉनेस्ट आंसर्स नहीं मिलेगा ना. सो उसको अगर उन्हीं लोगों को आप पूछना है, पूछने का तरीका अलग होता है ना. सो अगर मान लो किसी को पूछ रहे तो आपका बिजनेस क्या कर रहे हो वो तो रिवील मत ही करो, मत बताओ कि ये मैं करने के लिए सोच रहा हूँ. स्टार्टिंग करो कि ऐसे सिंपल कॉन्वर्सेशन. मान लो एक टेट्रा पैक कंपनी मैं चालू करना चाहता हूँ, मैं मेरे दोस्त लोगों को पूछना चाहता हूँ कि इसका वैलिडेशन करना है, ये अच्छा बिजनेस है या नहीं. उनको डायरेक्टली मत पूछो कि करूंगा, उनको बताओ कि अच्छा आप जूस पीते हो या नहीं. हाँ पीते हो तो फ्रेश फ्रूट जूस पीते हो, नहीं तो टेट्रा पैक पीते हो. अच्छा टेट्रा पैक में पीते हो तो कौन सा ब्रांड का पीते हो और क्यों वो लोग कंज्यूम करेंगे. वो सब से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि अच्छा ये सेगमेंटेशन में, जूस के सेगमेंटेशन में, ठीक है, एक ऐसा आप 10, 15, 20 लोगों से बात करना पड़ेगा आपको, कस्टमर से, है ना. कस्टमर मतलब पापा मम्मी भी नहीं है, मतलब फाइनल कस्टमर जो भी है. अगर मान लो आपका बिजनेस ड्रिवन कस्टमर है, उनसे बात करो, उनसे बताओ मत कि हम ये ऑफर कर रहे हैं. उनको पूछो कि आप उस प्रॉब्लम के लिए अभी क्या कर रहे हो, कितना कितना कितने में आप वो सर्विस या प्रोडक्ट ले रहे हो, आपका दिक्कत क्या क्या है, और भी कुछ दिक्कत है क्या खरीदने के बाद भी, कैन यू सॉल्व इट, है ना. ये सब मार्केट सेगमेंटेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, बट बड़ा गलती करने से रोकता है स्टार्टिंग, है ना. सो शुरुआत करने के पहले ये सब सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना. उसके बाद सोचो, मतलब रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि रिस्क पूरा जिंदगी का रिस्क ले लूंगा, नहीं. रिस्क लेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है. वो कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेटेड रिस्क सब लोग बोलते हैं ना, वही तो बता रहा हूँ अभी, है ना. सो कैलकुलेशन करो. ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा मुझे समझा था उसी हिसाब से मैं सोचा कि ये पॉइंट शायद आपको भी इंटरेस्टेड रहेगा, है ना. सो hope I have done justice to the time provided by the college.
And thanks for all the participants to be here and having a patient listening. अगर कुछ questions है तो आप तो पूछ सकते हो. हाँ? Thank you. Thank you so much, sir. I would like to request our audience to please raise your question, raise your doubts if you have any doubts regarding the entrepreneurship startups and Smart India Hackathon especially. Please. Any doubts, any silly doubts, any big doubts? If you have small doubts, also these are very important. Don't think these are dumb questions. There's never a dumb question. Okay, think you are a smart guy and think this has to be answered by someone, and you might not get the platform to ask right again or later. Whenever you want, you might not find the answers. So उस हिसाब से सोचो कि क्वेश्चन फ्रेम करना, क्योंकि सबका मन में क्वेश्चन होगा, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वो अलग बात है, बट सबके मन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा. हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो. सो छोटा मोटा क्वेश्चंस भी है तो पूछो. लेट इट मेक इट इंटरैक्टिव, है ना. सब क्लासरूम जैसा नहीं है. हाँ, मैं टीचर भी नहीं हूँ, वो अलग बात है. ठीक है. Thank you. Sure. Students, you can ask question in Hindi. Yeah, You will understand. He will give you the answer. हाँ हाँ हाँ, समझता हूँ. मराठी सिर्फ मराठी नहीं समझता हूँ, बट हिंदी समझता हूँ. But anyways, if you have any questions, you can always reach to me. Not an issue. Would be happy to help you out. Okay. Yes. Any questions? Sir. Hello. Thank you, sir. Sure. Thank you, our Dr. R.S. Pawar, sir, and our Director Mushalkar, sir, and for attending and giving the permission for this webinar. And thank you very much. Thank you and all. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, for giving this opportunity. I would like to wish all your students and all the best, and let them have a good future, and let them take decisions when they have to take. I hope them all the best. Excuse me, sir. Yes. My question is regarding the Smart India Hackathon. Okay. So, how did you reach on that stage? I want to ask. What is the procedure throughout the whole procedure? I'm not sure about Smart India Hackathon per se, but there are so many hackathons that is happening around. So how do you want to address an hackathon is, you will not have, say for example, you don't need to think about an idea. In a hackathon, generally what happens, they will give you some idea and they will ask you for solutions in a particular field or a particular kind of, at least they will give you a whole ballpark, like telling this is the area they want to concentrate on. So your search of ideas will be narrowed down. So it will be easier to take take up the idea. And secondly, go through any hackathon and see what they want in a hackathon. Because these hackathons, don't think it is just a hackathon. These are pain points of the industries or the governments. Yes. If you solve this problem, and it's a very good opportunity, if you solve this problem, you will get funding, you will get backing and support. If you are winning the hackathon or first few people, right? So make sure to approach in that way. And after that, how to solve it? Is it an online thing or an offline thing? So all these ideas you have to consider. Let the idea come first, and then you can work everything backwards. Yeah. My second question is that, sir,
if our student have some idea, Mhm. and if you want to present this among the angel investors, Mhm. so how to find that the angel investors are looking for the ideas, any So website name or any I will tell this? you, all these angel investors or venture capitalists or any investor for that matter, they want to think in terms of their shoes. Okay, they want to make money at the end of the day. So they'll put FD if it is normal human being, or they'll put in stocks. And some people who have more money and more appetite, they'll put in startups or companies where they can Yes, yes, increase their wealth, right? So if they're yes, trying to increase the wealth, they are not running your business. Don't be in that false hope. yes, Okay? So if they want to increase the wealth, so it means to say they will have a network. So there's something called as yes. Indian Angel Networks. Similarly, there are so many other networks. Indian Angel Network is the biggest network in India. You can start with them. Mhm. You can pitch your Yes, ideas to one, two, three of them. Then at least you'll ask them for a feedback. Sometimes you might get a reject, right? But ask them why you have rejected so that you can correct. yes, yes, Correct, right? So accordingly, there are so yes, many yes, ways where you can get money. Money is not a problem. I'm telling you. People who don't have money will have that issue. But in India, if you have a good and top notch, and if you're deserved, money will come to you. okay, sir. So this Indian angel investors, that have separate website They have a or website. It is called Indian Angel Network. Okay, if you can okay, do a Google search, you will find more information on it. okay. Similarly, we have different Thank WhatsApp you. groups, LinkedIn groups. There's so many other groups. Like if there's the college in the class, they'll have a WhatsApp group. Similarly, if there are investors, Yes, they'll have some groups. So see if you can tap into those networks and make networks. It's important to make sure you're doing yes, a yes. business or not, but in life, make sure that you have all the people till now. Be in touch with them. You will never know who will work when, who will be of help when, right? So accordingly, you can take it up. Yeah. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Any other question from the audience, please? So I hope there is no question from the audience. So at the last, I would like to take this opportunity to thank our eminent speaker, Mr. Nagras Srinivas sir. And on behalf of Shreeyash College of Engineering and Technology, Aurangabad, I would like to thank our speaker, and I would like to thank our principal sir for motivating us for organizing this type of webinars and seminars. And I would like to thank our director sir. I would like to thank our all the HODs, faculty members, and other staffs. I would like to thank all the IIC members who are the part of this event, all the participants who patiently listen our speaker, and I hope that they will continue to listen and participate in entrepreneurship development and startup development events organized by our college. I would like to request all the faculty members to please participate and encourage our students to be a startup or to be a entrepreneurship development events. So thank you everyone for participating in this one. Thank you, our honorable speaker. Thank you, Thank sir. you, sir. Thanks for your time. Thank you, everyone. Yeah. Okay. Thanks for your time, sir. We will also call you if you will ready to come to our campus in uh, physical mode. Yes, yes, definitely. Look forward to that. Thank you so much. Yeah, yes. Yeah. Okay. Thank you, Dr. Venkatraman sir, for hosting this event all over and organizing and contacting all this uh, uh, network you have with you, sir. Thank you. So please, I request to everyone to leave this meeting. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Venkat sir.
I will close it. Stop the recording. Stop Record the stop कर recording. दिया. Yes. Stop कर दिया. नहीं सर, चालू Close में it? दिखा रहा है इधर. I stopped. I gave stop. रिकॉर्डिंग चालू है सर इधर लेकिन. Go to that 3 lines and stop recording. Then Yeah, I stopped you many will times, see but it is remaining in same. right corner you see that there is some stop recording. Blue color is there. You see? आ गया. हाँ, उसको स्टॉप पे ब्लू कलर पे क्लिक करो तो